give a small introduction of Sir Faisal. Uh, Sir Faisal did his bachelor's in veterinary sciences from University of Agriculture. Then he did his master's degree in microbiology from Key State Laboratory of Preventive Medicines from Huachong Agriculture University, China. Then he went for a PhD to Germany in Hanover Biomedical Research School, and his major was molecular medicine. And now, currently, he's working as a research scientist at Wexner Medical Center of Ohio State University, Columbus, in America. So we all welcome you, and we actually thank you for giving your precious time. And not to mention his awards and honors which he has achieved during his journey, and they all are adding a feather into his cap. So I will ask Sir Faisal to please continue this session. Sir, please. Thank you so much, Dr. Hassan. It's my pleasure to have an interaction with you guys. I hope that you can see me. Let me fix this stuff first. Dr. Hassan, can you let me know if everything, my voice and picture is clear? Yes, sir. It's clear. There is some issue with your video, but I think it will trying fix. to fix it out, and then we can start properly. Okay. Okay, sir. Okay. So whenever due to pandemic, there is always issue with these kind of stuff. So I hope that everyone won't mind it. So we understand. Okay, I think so it will be like this because it's not working. I'm trying to remove these filters and the background, but it's not working anymore. Okay, anyway, should we start our session? I think so, directly from our presentation, which I tried to prepare for you guys so that everyone can have the visual effects to see the content, what we're gonna share today, and what we have specifically our target to keep this session very lively. First of all, I want to really thanks to Dr. Hassan, who really gave me an opportunity to have interaction with you guys and to share my thoughts and what I really feel about to have direct communication, to reach out my life experiences so that one can get benefit and maybe someone can reach to those milestones for which someone really wish for. So whatever the material which we will have a discussion today, it will be purely to my experiences. And I really think about that if anyone will follow any of the stuff in their life, they will really reach all of those kind of milestones for what anyone or everyone can wish for. So I want to start with the presentation. So the topic is career aspirations and future perspective.
So first of all, I want to give brief introduction about myself regarding what I have done. Dr. Hassan also gave me a short introduction about me. So what I have done my bachelor's in veterinary sciences back in 2008 to 13 from Agriculture University, Faisalabad. And that was my mother institute from which I really uh, got my real passion and inspiration to move ahead in my life. And afterwards, got a scholarship from Chinese government by which I moved to China. That was the Huachong Agriculture University, and I've done my master's over there. And later on, after 2016, I got another prestigious fellowship from Germany, and that was a transition phase, and it was a challenging phase when I switched my veterinarian background to the human cancer side. So there was a transitional phase which was challenging, but the whole research was shifted towards the human cancer side, because in their program they were demanding for a person who has a veterinarian background and who can really work on the means mouse and these kind of in vivo experiments. So they were looking for their specific stuff, and I was quite excited for the quite new projects, and I shifted towards my human cancer side, oncology side. So that was very exciting. And due to which, after completed this PhD in 3 years, I got 5 jobs in US as a research scientist position, and 2 in Canada, and many more. But I choose this institute because it's in USA. This Wexner Medical Center is a top 5th ranked hospital in the world, and that's why I choose over here. And since 2019, I am working over here. So to address you guys, the most important thing in life, whenever we think about that, after high school or college, that was my kind of feelings when I was doing my college studies and these kind of things, that we always think about, and we always want to ask that what are the things, what are the major or degree we have to choose for. Either we have any kind of intention in mind or any kind of specific background that what we should have to do. I mean, which degree or which major should we have to choose? Or either my parents, they are looking something better for me. We don't know anything where we want to move around. We just looking for the parents. Either they are choosing for the good degree or major for us. So we are usually waiting for their response or relying on their response. Or we also never think about that which university will be good for me, or which degree will have the more scope in terms of the more kind of a jobs opportunities, and either my specific degree where I'm intended to go, either they will give me that kind of job where I will have the kind of a very secure future. So we also means these things we never think about. Either we don't think about that either after the most important factor after the degree, the salary point of view, that either the specific job which I will go, either they will have that much salary by which I will have that kind of lavish aspects of the life I can feel about and I can enjoy about. Or we think about the financial issues, that either to the many prestigious universities in Pakistan, they are making the semi-government universities or the totally private universities, which are means they are producing a very nice research quality products out of their mother institutes. So we also feel so much financial issues to get into those kind of universities. Also, there are sometimes the merit kind of issues, that we want to go into the specific good programs, but there are some kind of merit obstacles. We can't get into those kind of universities. Also, sometimes family-based issues, that especially country like Pakistan, sometimes the people from South Punjab area and these kind of regions, their parents are not willing to send their kids, especially the daughters, to specific universities which are quite away from their homeland. So these are some kind of the queries after high school or college we used to ask from ourselves, or we never think about these kind of things. We are just means
totally blind when after doing our high school or college. So what are the possible solutions, what we should have to do after these kind of basically queries in mind? That did we ever think about that which specific profession or specific program we have interest for that one? Either we also think about that either that specific field has instinct passion inside me or not. We never think about these kind of things. If we think about these kind of things, we can figure out these things. So if we also never think, or we could think to start with, that the program or the degree we are going to, either that is a good fit for me or not, or if I will pursue with specific program or degree, either that degree or program will be a good fit and that will give me 100%, they have the potential for giving me a better future or the better outcome in terms of the job, in terms of and salary, in terms of everything. Or the specific program or the degree or the major I'm choosing, either that will give me the kind of, I will enjoy studying or working in that same field, or that will be a totally mess up for me every time I have to struggle with. Or either I will, the most important thing during doing that kind of degree or major, either I will feel internally satisfied or I will means super happy to do these kind of things. So the answer to most of these questions is no. We never think about these kind of things, that either specific degree or program we are getting into, or the major or the university, or we never even think about the future jobs or the outcomes. Because our mindset, most of us, our mindset is quite restricted. Okay, you have this much scores, you have to go into this specific university, because otherwise your merit would have, your merit won't get adjusted, you won't have the opportunity to get adjusted to those universities, or we have the financial issues or the distance issues or family issues or whatever. But we never think about, most of us, when I was a student, I was totally blind, and that was very means challenging stuff when you are going into a specific degree or program and you don't like it or you don't know about the specific things. So this is very challenging to most of the students who are working or who are studying in the country like Pakistan, or who are from the kind of a mediocre background. So what we have to do with the specific condition when we have these kind of things, and we should have to figure it out to excel in our life. So best method to deal with this kind of situation, initially, if someone figure it out after their high school or their college degree, that find the profession for which you have passion. So if you have the same profession, then it will make your life super great. There will be no even a question for 1% that if you have a passion and profession, then you will love and you will enjoy each and every moment of your life by working. And then the situation will be like that, that you won't have to work for your money, your work directly pay you without letting you think that you are working or any kind of a job. So if there is a situation, same passion, same profession, it will be great. And that will only happen if someone is super lucky, who has figured out their interest after their high school or college degree, and they know that we have to go into this specific program, and luckily they got the merit, they don't have any issue, and they get into the same program. But what if there is a different passion and we have the different profession? So then we what have to do in this condition? Most of us, I totally remember, almost 90% of our students belong to this category, that we always get digged ourselves in a profession for which we don't have passion. So in this condition, everyone think about that it won't work. But in my case, and what I today, my main
point to let you know, guys, make excited that it will be really great in your life, because no pains, no gain. That will be a challenging situation. And whenever there is a challenging situation, a person who is really determined, who really want to do something extraordinary, they will do really great things. If you have same passion, same profession, really nice. But there are many situations when we can't figure it out due to many things. We don't have so much resources, we don't have so much information, either we don't have so much background, or our family don't give us that kind of senses or these kind of things that which we can find the same situation. But if there is a different passion and we get into the different profession, then rather than to make it a very disappointed, I really 100% endorse you guys that it will be really great if we will opt some kind of a techniques to polish ourselves, to make ourselves really groomed, and to accept the challenge to go ahead in our life, that we can do it and we will do it. There is a famous quotation that everyone used to say, that the word impossible itself says, if we split that impossible into three parts, itself says, I am possible. So before heading towards these techniques to polish yourself, you should have to keep in mind that we have to accept this challenge. We are now into a specific degree or a specific program. Either we like it or don't like it. If we really want to make progress in a life, we should have to make it a challenge for ourselves, and we have to make it very sure that we will do extraordinary in these kind of things. My main target for today's discussion, that we have 91 participants until now, that everyone of you after this presentation should have to promise and should have to make challenge in your life that we will do it. And if you will accept this challenge, I really guarantee you everyone will reach to those kind of destinations for which you guys even never think about. So what we have to do, if we have the different profession, different passion, or the same profession, same passion, we have to do something extraordinary, because now whatever we are going to discuss, it's all about that you have to compete yourself, not among your class fellows, not among in Pakistan. You have to compete all around the globe. And to compete, there should be something extraordinary for which you have to make yourself very well prepared. Okay, so first of all, the first thing is you have to figure out that what weakness or strengths you have. So for example, if someone is thinking that I am not much consistent in study, or I don't have time, or these kind of things, enlist all of the weakness and enlist all of the strengths you have. And then you have to work one by one after setting the goal. So for example, my goal is to get a master's or PhD degree by scholarship in USA. So what I have to do, so that's my target or goal. I will enlist all of my weaknesses. Okay, I have this much weakness, this one, this one, this one, and strengths. And then I will start working on my weakness one by one. Okay, this weakness can be coped with this strength, and this is with this one. So each and every weakness should have to cover with the strengths by working over it. And we have to work over it. If we really want to get some kind of achievements in life, we really have to figure it out. We have to write it down, each and everything, and we have to work over it. Once we figure out weakness and strength, we have to make our profile super impressive. So for example, at this time, everyone is doing master's or PhD, or you guys undergrads or these kind of things. So what after doing these kind of degrees, what you gonna do? You don't know. But this is the best time. You have to avail opportunities. This is the best time by which you have to
use each and every minute of your life to make your profile super impressive. And how you have to make your profile super impressive? You have to learn new techniques or skills in your field. Everyone is doing degree, everyone is doing just paperwork, reading or learning specific topics about the stuff you are going to learn from your teachers, and your target is just to pass the specific course and go ahead and to get a degree. But if you'll do like this, I guarantee you will get a degree for sure. But if you want to really make a big difference in life, then these things won't be sufficient. It's a huge competition among the world, and if you really want to compete and really want to be a position where everyone really praise you and appreciate you in your life and really give you regard, you have to learn new skills in your field. How you have to do that? There are online courses. There's so much platform. This is a era of a technology, and each and everyone has the kind of a reach to the all technologies, and we can learn so many new things from these online resources. And what we have to do, for example, there is a Coursera, Udemy, and many things like that. So what I want to make you sure that how you will make yourself really different to those people who really think that we have just to pass the course, get a degree, that's it. But we want to make a difference. What we have to do, we have to make our profile or CV in a quite a different way. For example, if one student, after getting specific biotechnology degree or microbiology bachelor's degree, they just have a piece of paper, they don't have anything on their CV or these kind of things. We have to make their CV super impressive, that there should be, if I'm a recruiter, I am looking at CV of 3 students, and once I will see one person has a degree who has just mentioned the specific courses he learned in that degree and nothing else. Another student who has a very kind of a lusty and impressive CV, he has learned so many new courses, even no other student think about it, even no other students know about it. They are the courses which are up to a level of master's degree. They are kind of a practical courses, they learn by themselves. So if you will mention these kind of things on your specific profile, it will really attract me. Oh my God, that student has done something extraordinary. So I will really choose you for a specific position in my lab or these kind of things. So we have to think about it. The other thing, we are talking about to do something extraordinary, which is beyond the limit. So you have to learn some practical skills, even from the online courses, to get in-depth knowledge. And the most important thing, when we are learning, we are just kind of memorizing, not learning. We used to do like these kind of things. We are trying to memorize things. We are not learning actually. And how you can learn specific thing that will embedded in your mind and in your whole life, for your whole life, the most important thing for is to do a kind of a practical exposure. There are so many students who are doing the kind of a masters or PhDs in your specific institute. You even can't, in our country, we don't have the access most of the time, being an undergraduate student, to go into the labs or to do any kind of practical experiences. But what we have to do, what we can do, we can have an interaction with our seniors who are doing masters or PhD, who have the access to the labs. We even can't do experiment, I know that, but we can do something. We can really get in-depth knowledge by ourselves, by learning, from reading from the books, from online resources or whatever. We can see videos on YouTube. There are so many resources. We don't have any kind of a excuse that we can't do this or these kind of things. We can see videos of those passive. For example, if someone is reading about PCR, polymerase chain reaction, we don't know anything about it. We are just reading. There is DNA primers,
we have the enzymes, we have the template, and we have to combine them specific temperature, then the DNA will be elongated or these kind of things. That's nothing. That will not be practical. And if someone will want to hire you, then you won't have any exposure even to the machine or even to the apparatus. What you have to do, you are learning, you are means kind of a memorizing, that's very good thing. You are trying to understand by the lectures of your worthy professors, that's amazing. But extraordinary, what you have to do at this point, you have to either get, first of all, learn those practical skills by watching videos that will give you a really deep insight that, okay, this is the PCR, this is the qPCR, I read about it, PCR and qPCR, what are the differences? But now I am looking at those specific techniques, and then you will have much more broad vision. And then you can even discuss with your seniors who are working in the labs. Okay, Dr. Hassan, you are my senior. Can you please let me know? I have seen this video, I have read about it. These are the different techniques. I am just a bit confused how you guys have to do it, how you guys get this primers, how you guys get design these primers, how this really happen. You can discuss with these things with your seniors, and that will be really attractive for your lifelong. And I guarantee you, once you will do these kind of things, there won't be any interview all around the world that you won't be able to crack it. You will be able to crack each and every interview, and even the recruiters will get surprised. Even that student was undergrad or master, but that has a he has a or she has a very strong grip of knowledge of the specific things. The other thing, so we used to do a specific degree and that's it. What we have to do something extra. We have to try to get language certificates, even if we are kind of a undergrad or master student. That doesn't matter. You have to, I remember myself, all of the things which I am mentioning, I means do it in my life, and I try to implicate all of these principles when I was doing undergrad or masters or these kind of things. Do try to get English language certificate. So if anyone has a financial issues, who is not able to get into specific institutes. I remember in Faisalabad there was Kaplan. I had the financial issues, but I tried to manage my financial stuff. I went there, and that was a kind of I didn't know how to speak English or this kind of thing. That was a kind of a shyness element and many things like that. But now you have the internet resources, you have each and everything. There are the bunch of courses by which you can get free online courses by getting IELTS or GRE or TOEFL stuff. So you have to, I really, really recommend you, if you really want to make a big difference in your life, you have to get any kind of language certificate, either IELTS or GRE TOEFL, if you really want to get any kind of a scholarship anywhere around the world. And the best thing, 100% guarantee you, if you will do these kind of things, you will get scholarship, and you will have the most important thing, have confidence to talk to a professional person. You have the capability to reach your idea, what you are thinking about, once you will go through these kind of things. So I'll really recommend you the most important factor. If you are doing, for example, you are in 4th semester, 5th semester, 8th semester, and you have a degree of 9th or 10th semester, means kind of a 2 semesters before ending your degree, or that will be the ideal situation to get into these kind of things and to get a specific required scores in IELTS. IELTS is a international English language testing system. The very recommended scores to apply for any scholarship is score band 7. So I believe we Pakistani have the official language, we have an English, so we have an advantage. We just have the main element by which we think that we are not able to speak or communicate in English. That's very messy or fussy situation. That's not like that.
That's the only thing we are totally shy. We really think like that. If we will make mistakes, then it will make people will laugh at me and these kind of things. If we are thinking these kind of stupid things at this stage, that's for sure in all of our life, people are always able to laugh at us. We shouldn't have to think about these kind of things, that the person, whatever he is thinking or she is thinking, that doesn't matter to me. And you have to jump into it and try to get this certificate as well while doing your undergrad or master's. That's really highly recommended. Other thing is to build network. That's the important, very important point, which I really experienced when I was doing my undergrad. I didn't have any kind of a knowledge about scholarships or going abroad or anything, but I had the passion. And what I used to do, when someone has hunger for specific thing, he or she will try to figure out any resources, any possible resources. And those time, the laptops, I did not have the access. I was just waiting for opening up the library to go over there. And what I used to do at that time, I built means make my profiles even on the LinkedIn and ResearchGate and these kind of things, by which I can get networking with my seniors or with the professionals who are in the same field from which I am belonging to. And I try to send them message randomly in a very polite way, very respectful way. Whatever I had query, I used to ask them, okay, sir, I am a first give my introduction. I am an undergrad student. I'm really enthusiastic to get this scholarship. I really want to get this kind of information if you really provide me, or I want to do this kind of a job for which you are doing. Kindly means give me any kind of idea that what specific things should I have to do, or can you guide me? You know, networking is the most important element. These white, so-called white Gora people, they are very strong in networking. They build very good networks while they are studying. So once they have the good links with their alumni or with their seniors, because their alumni or seniors, they are the nice position in specific industry or in a specific job or in teaching sector or whatever, and then they can directly endorse you for interview, or maybe they are the directly recruiting someone. So if you are trying to build a good networks, you are in contact with them, or you are trying to get informations from them, they can provide you insights, whatever is going inside the industry or whatever is going inside the specific lab, and you can prepare according to that. And that will be really a plus point if you are doing networking. So networking is most important thing. You can see people's profile. For example, if you are going to LinkedIn, you will see Dr. Hassan's profile. He must have mentioned each and everything that he has done. He has means learned these specific courses. He has done this much extraordinary things. He has done the kind of these kind of internships or these kind of, so you can see his profile, and then you can get an idea, okay, if I really want to reach up to that level, I should have those capabilities as well. So networking has a very plus point if you really want to polish yourself or your resume. The other thing is apply for internships. So whenever we have the summer phase, we have the holidays, or we used to make lame excuses. Okay, I'm super tired. I used to study all the day from 8 a.m. to 3 p.m. or 2 p.m. attending my lectures or these kind of things. And I don't have time for any these kind of means internships or working something. And we also have kind of a egoistic problem that if I am working, they are paying very less or they are paying nothing, and I am trying kind of a working as a servant and it's useless. No. Apply for internship means that you are gaining practical experience for specific thing. Even if you are all are biotechnologists working, you have to join some kind of a lab by which you can even only work for 1 to 2 hours. If they are asking you even to clean dishes sometimes or this, please don't consider it
kind of a disrespect or these kind of things, at least you will have exposure to each and every machine instrument, and you will see how they are working, how they are running, and once they will also give you an opportunity to work over it. And I'm sure if you are a student, you have a kind of a university tag with you, and they will give you an opportunity to work on the specific things with the seniors, technicians, or these kind of things. So apply for internships whenever you have an opportunity, even during your study phase or even during the holidays. That will really give you a boost up for your upcoming career. Other thing is research about all possible opportunities to seek knowledge. Again, we are very bad being a Pakistani student. I will say that we don't love to read books. That's really frustrating. We are really kind of a very specific to the lectures which we used to get from our universities. We even don't bother to get into depth of the knowledge. So I will kind of request all of you, if you really get, for example, if you're learning any topic from your class, and if you're reading that specific topic only from 2 to 3 different resources, it will make a huge difference in your vision. If you're learning one lecture from your professor, that's really amazing. You understand everything, perfect. But if you'll read that specific topic or try to learn that specific topic from other 2 to 3 resources, I mean online or reading some couple of books or these kind of things, it will be it will make a huge difference, and that will be a permanent impression in your mind for that specific topic. So I will suggest to try to get into a deep insight for all possible opportunities of seeking knowledge, and try to learn super new skills in your specific field. Make a list of all practical uh, kind of a topics which your field has kind of imitations again and again. For example, you are a biotechnologist, what is PCR, qPCR, Western blot, ELISA, these kind of things. You are reading it, you are not learning it. I know it. I have passed these kind of phases. I will really suggest you try to learn these skills, online resources from your seniors, from try to means get practical exposure of those specific topics in your field. Improve your resume. After doing everything, you will have, ultimately, if you will follow these kind of things, that will be a huge improvement in your resume. And the building up the resume is a very important factor. And nowadays, what I really recommend you, because we are talking about something different than others, so these are the things which are totally different than a common student, and you all are not common, because you all promised me that after this lecture you all will try to adopt these all skills in your life. So we have to make a personal website. What it mean? Personal website containing your resume. That's a very catchy, attractive, new, innovative way to cash your abilities, to make other recruiters feel, oh my God, he has done something amazing. So website creation is very simple. You can means learn in 1 week how to create your own personal website, and there are many softwares. You just have to put information, they have the templates, they will create their websites by themselves. I will even provide you the links if you guys want. You directly have to put your specific information. Okay, I have done my bachelor's in biotechnology, I have these kind of skills, I have these kind of practical working experience, this is my internship stuff, this is my language stuff, scoring, each and everything, I have this much extracurricular activities. So you can put all of these things on personal website, and that will be very catchy, I'm sure. What do you think if you have your own website and you are showing it to your, even your kind of relatives, or you put on your LinkedIn profile or Facebook or anywhere? That will be really attractive, and that will be super attractive for the recruiters. If you are applying for any master's degree scholarship anywhere around the globe, and you will just provide a link of your website along with your CV,
the recruiter will feel, oh my God, I have each and every information of that person. He will have the judgment of your personality, what kind of person you are. And maybe he won't even ask for interview. And maybe there will be an interview for a specific job posting, and he will just have some kind of a very entertaining interview with you, just jolly question, these, because he already gained an insight about your personality. And these kind of people, the Americans or the British, they are really reluctant to recruit us because they are not able to figure out what kind of person we are, because our CVs are stupid, foolish CVs. So it's a huge, means a complete lecture for building up a very kind of a catchy CV. I remember when I was applying, even we used to put, okay, my name is Muhammad Faisal, gender male, my CNIC number is blah blah blah, and I am living in blah blah town, and these kind of things. These are really unnecessary things. They are not asking about initially in your CV, please tell me that what CNIC number you have or what gender you have. In scientific professional way, they are just looking for your scientific capabilities. They don't consider these kind of things. And we make 2 to 3 pages CVs, really stupid. 1 page CV, very attractive thing. If you are not able to express yourself in 1 page, it means you are worthless. You don't have any worth. You don't have specific command on your own abilities to express yourself. So there's a complete lecture on building a resume or CV. But the important factor here I wanted to enlist is techniques to polish yourself, is to create a personal website, which is a very catchy and amazing thing to make a big difference among other students. Other thing is to do something extraordinary. I mean here to do something extracurricular activities, which are very healthy activities. And that will for sure make a good impact on your life and to make you streamline in your goals. And you have to do something extraordinary or extracurricular activities as well to make a big difference. So if we go through all of these techniques, for example, or we done so many online courses, we are trying to learn many new kind of new things about specific subject from different resources. We have get a English language certificate from some institute. We have some practical exposure from our specific department or major from our seniors, or by learning online by watching videos and these kind of things. We have specific kind of a goal in our life. We have make a personal website, we have improved our resume, we have done a couple of internships. So we have now very good impression, by which I am sure after doing all these things, we have built a very strong background by which we can really hunt and crack each and every scholarship and fellowship all around the globe. And then I will say congratulations, an amazing lavish life is waiting for you. This lecture, I didn't get into depth for hunting and cracking for scholarships. We can schedule it another time. That there are amazing scholarships all around the globe. You can find it out, you can apply for it, and how you can apply for it to maximize your chances to get it. So we can do that session another time, but this time, after doing all these things as you promised me, I say congratulations. Now a beautiful life is waiting for you now. And what is meant by a lavish, beautiful life? You will have your own salary while you are a student. You have a scholarship now. Come on. Everyone is just consider you as an employee, not a student. So you will have tours all around the globe. You have your own money. You don't have a financial problems. You are just wandering around all around the globe and having so much fun with your own salary. You don't have to ask from your parents or from your elders or these kind of things. So that will be a
I have a question. And then you can have free accommodations, your lifestyle will get changed, you will have the internal prestigious satisfaction around your relatives and friends that you have achieved something and you are not relying on others. And the important thing that after doing all these kind of things, you will have 100% guarantee to get a desired job, whatever you want to, or whatever passion you have for. And the last but not least, the important thing is there is a personal internal satisfaction that you have achieved the goal you have set for your life, and you have already gained all of the luxurious life stuff, and that will be more than enough for a person having lavish life. So I want to just give you a kind of a impression about lavish life aspects. What a person being a student, when I was doing my undergrad, I had this kind of impression, oh my God, people are enjoying all around the globe. They are doing so much fun while doing studies. They don't have any financial issues or these kind of things. I was being myself. Sir, I have a question. Can I ask? We will have that specific session. Just wait. Okay. So I belong to a mediocre family. I didn't bear expenses to get even go from Faisalabad to Islamabad or these kind of things. So the only opportunity was to improve my skills, to polish my abilities so that I can enjoy equally as any person who can afford this kind of lavish life. So let's have a look. So that these pictures were when I was in China doing some fun with my colleagues, doing lab work, and then I get my degree when I was in China. Then I was in Germany, had some fun in the Berlin Wall and everywhere. That was also in Berlin, and then doing work, getting degree with hi-fi colors. Then I came into here in USA, getting job, enjoying also over here while doing study, now working at the James Cancer and Solver Research Institute, which is the 5th ranked hospital around the globe. And now it's time for you. You guys are waiting for what? I'll just try to enforce in your mind, just change the thinking lifestyle and make a transition of 180 angle and just shine your own world. That's the best time for you guys. If anyone has any kind of weaknesses, not good in study, cannot do good in study until so far, but this is the time you have to change your mindset. You have to think it that I can do it, I will do it, and try to improve yourself each and every aspect, work on them, what we have discussed now, and this will be really a huge impact on your life and everything. And the future queries regarding scholarships and everything, I have kind of I make a page on Facebook to guide other guys, and a YouTube page where I used to post videos with my other mates, and that will be a good platform for you, because we in upcoming sessions we used to make videos and we used to post over there for each and every aspect, that how you can get very good scores in IELTS, how you can get scholarships, which are the sites by which you can get scholarships and everything. So this is the link. You can go through this YouTube channel. There are many videos over there. Also our career aspirations page on the Facebook, where I used to post every day, almost every day, about every recent possible scholarships, either indigenous scholarships, national scholarships, most of all are international scholarships. You can visit them off and on to get an impression what kind of scholarship requirements are, or how you can apply for it and everything. And at the end, I want to say, to succeed in life, you must believe. To believe, you must have passion. And to have passion, you must not be afraid of failures. So
with this, I want to really thank you all guys for your patience, for bearing me and listening me up. And the last but not least, I want to really thanks to Dr. Hassan, who really gave me an opportunity to speak up and to talk to you guys, to interact with you. If I will be super happy, and that is my prime goal. If I wish every one of you should have to get anything positive from this kind of a talk, or if any one of you reach to that kind of a milestone, that will be, I will think that my life goal has been achieved. So thank you so much for your attention, and that's the time to take live questions. Thank you so much, sir. Okay, students, you can ask your questions, please. If someone is getting shy, you can ask in whatever language you want. Sir, how about I start a question? Sure. Can I, please? I think so. People are just a bit reluctant. You have to Okay, and maybe I'll say in Urdu, so that would be people will. nice. सर अच्छा सर, आपको पता है कि हमारे जो हैं बच्चे वो मोस्टली रिलक्टेंट होते हैं अपना जो स्टडी मेजर है या सब्जेक्ट जो मेजर वो पढ़ रहे होते हैं उससे जो ट्रांजिशन होती है उस पर बच्चे बहुत रिलक्टेंट होते हैं। तो आपको इनवाइट करने का एक मकसद मेरा ये भी था कि आपने अपने मास्टर्स के बाद पीएचडी में आपने कंप्लीट जो अपना रिसर्च टॉपिक है वो ट्रांजिशन किया। तो सर, डोंट यू थिंक इट वाज अ बोल्ड डिसीजन टू डू? बहुत अच्छा क्वेश्चन है हसन भाई। ये है कि आजकल जो दुनिया में साइंस की जितनी भी इनोवेशंस हो रही हैं, अगर आप देखेंगे लोग इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। इंटरडिसिप्लिनरी और इंट्राडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स में क्या फर्क है? Interdisciplinary, if you are in a specific discipline, for example biotechnology, all of your research grant और सब कुछ आपका उसी डिसिप्लिन के अंदर ही रिलेट कर रहा है कि मैंने ये टेक्निक्स करनी है, ये टारगेट अचीव करना है। इंटरडिसिप्लिनरी मींस आप फिजिक्स वाले बंदों को भी उसमें मिला रही हैं, आप बायोलॉजिस्ट को भी मिला रही हैं, आप कंप्यूटेशनल साइंस स्टैटिस्टिक्स वालों को भी मिला रहे हैं। तो वो जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं ना, उससे जो चीज आप इन्वेंट करेंगे वो टोटली एक इन्वेंशन होगी। और आजकल दुनिया जितनी भी इन्वेंशन हो रही हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट से हो रही हैं। इसी बात को बढ़ाते हुए मेरे माइंड में यही था, मेरे पास वेटरनेरियन बैकग्राउंड था। दुनिया के अंदर जितनी भी रिसर्च हो रही है इन विवो स्टडी के बाद ही, अब जिस तरह ये वैक्सीन बनी है, सबसे पहले उन्होंने इन विट्रो एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद माइस स्टडी की। माइस क्योंकि जो ह्यूमन जेनेटिक मेकअप है ऑलमोस्ट 99% 90% जो जेनेटिक स्टफ है सेम है, तो हमेशा माइस के ऊपर फिर स्टडी होती है। तो वहां पे भी वेटरनेरियन का बैकग्राउंड बहुत ज्यादा इंकरेज किया जाता है, जिसको मतलब स्किल्स हो इन विवो स्टडीज के ऊपर कोई फेयर ना हो, क्योंकि बहुत लोग हैं रिलक्टेंट होते हैं इन विवो वर्क करने के लिए। तो मुझे शुरू से शौक था कैंसर के ऊपर काम करने का, ऑन्कोलॉजी साइड पे, हीमाटोलॉजी साइड पे। तो मेरे लिए ये मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे जाना है इस तरह, लेकिन जब मुझे इसका पता चला कि हियर इज एन अपॉर्चुनिटी कि जहाँ पे मोलेकुलर मेडिसिन एक प्रोग्राम है, ह्यूमन कैंसर पे काम कर रहे हैं, और उनको बायोकेमिस्ट भी दे वर आस्किंग फॉर, इवन बायोकेमिस्ट, मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट, वेटरनेरियन और everyone. So they make a kind of a collaborative interdisciplinary projects where I get adjusted, and वो मेरे लिए चैलेंजिंग था, लेकिन मैंने जैसे शुरू में कहा
कि नो पेन्स नो गेन्स, चैलेंजिंग जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला तो खुद कहता है ना कि मुश्किलात में डालता ही उसी को जिससे बड़ा काम लेना चाहता हूँ। तो चैलेंजिंग जरूर था, बहुत चैलेंजिंग था। इवन कि मैं अब जो काम कर रहा हूँ टोटली डिफरेंट था मेरा पीएचडी मास्टर्स वर्क से, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो इट्स अ लर्निंग फेज। तो चैलेंजिंग था बट इट वाज रियली नाइस। Thank you so much, sir. Please, you can ask your questions. आयशा ताहिर का क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर बेहतर हो आप ये पूछ लेंगी ना तो ज्यादा बेहतर होगा। So I have a question. My name is Aisha Tahir and I am working as a lecturer at Lahore College for Women University. My question is that I have been selected for Fulbright scholarship to study for PhD studies basically, and Welsh Cancer Center, Okay. Albany. So they are giving 1,510 rupees US dollars as a monthly stipend. So I am thinking that इतना होगा कि easily एक student जो है वहाँ रह सकता है। आप कितने अरसे के लिए ऑफर कर रहे हैं वो स्कॉलरशिप? ये मास्टर्स स्कॉलरशिप है? It's for PhD in biomedical sciences. That's perfect. So $1,500 में आप इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, आप अगर ज़ाहिर बात है हम तो बचाने का भी सोचते हैं, तो इजीली आप इसमें से भी 50 से 60 हजार बचा लेंगी बगैर किसी परेशानी के। मींस के योर अकोमोडेशन विल बी टोटली अराउंड 400 to 500 if even you want to have a single apartment, a single bedroom apartment. 200 to 300 मैक्सिमम जो है खर्चा खाने पीने का, इसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये बातें हैं कि बहुत महंगाई है और ये वो, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप कुछ भी ना हो $600-700 पर मंथ बचा लेंगी, मोर देन इनफ। Okay, thank you so much. I just wanted to know that. Another question? So I have a question. Yeah. सर मैंने ये पूछना था कि आपने इंटर्नशिप्स की बात की है कि इंटर्नशिप्स मतलब जितनी ज्यादा होंगी तो डेफिनेटली आपके रिज्यूम पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और जो रिक्रूटर है उस पर भी एक बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि बच्चे के पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं अभी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। मैं पूछना ये चाह रहा था कि हमारी क्लास की 72 स्ट्रेंथ है और हमारा सब्जेक्ट डेफिनेटली बीएस बायोटेक्नोलॉजी है। तो सर अब 72 बच्चों को ही वो रिसर्च के लिए या हेल्पर के लिए या व्हाटएवर लैब में वो नहीं अलाउ करते। तो सर उस केस में सर हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, कौन सी हम ऐसी जगह सेलेक्ट करें? अब देखें दूसरी लैब्स हैं वो डायग्नोस्टिक, वो बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड तो नहीं है, तो हमें काम करना है बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड का। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम दूसरी लैब्स में काम करके भी आया हमें कोई फायदा होगा या नहीं? आप नाम आपका ताहिर अहमद अली है सर मेरा नाम। अहमद अली, ये देखें कि आप चाहे बात कर रहे हैं बायोकेमिकल या डायग्नोस्टिक्स लैब्स, आप उधर भी जाके कंफर्म पता करें, वो भी वही टेक्निक्स कर रहे होंगे जो आपका बीइंग अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट कर रहा है। वो भी पीसीआर, क्यूपीसीआर, एलाइजा, वेस्टर्न ब्लॉट ये कर रहे होंगे, 100% कर रहे होंगे। आप जाके पूछ लीजिएगा। वो भी प्राइमर डिजाइन कर रहे होंगे जो आप करेंगे। वो भी मतलब उन्हें भी पता होगा कि किस तरह से मैंने कोई स्पेसिफिक टूल्स हैं या मैंने डाटा को एनालाइज कैसे करना है या किस तरह, वो भी सब कुछ वही कर रहे होंगे बेसिक्स। आप अंडर ग्रेड स्टूडेंट हैं, वही मैंने बात अपने उसमें की है। हम जिस मुल्क में रहते हैं बहुत ज्यादा हमारे पास रिसोर्सेज की लिमिटेशंस हैं। यहाँ पे जो ये कंट्रीज हैं बाहर के, तो ये तो इवन के अंडर ग्रेड से भी अब थीसिस मांगते हैं बकायदा, और थीसिस में बकायदा प्रैक्टिकल आपका काम होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब एमए बस कर दिया है, रिटन स्टफ है, इमिटेशंस हुई पड़ी हैं और पेपर वर्क कर दिया, बात खत्म। नहीं, यहाँ पे तो बकायदा अंडर ग्रेड्स में भी आपसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बेस पे आपका थीसिस मांगा जाता है। आपने क्या करना है, पहली बात जिसको मैंने वही कहा, जितना आपके अंदर
भूख होगी ना किसी चीज की, आप रिसोर्सेज ढूंढ लेंगे, उसकी परेशानी नहीं है। ये हम बेसिकली मैं था इस तरह के हम बनाते हैं लेम एक्सक्यूजेज, यार इस तरह है। जिस बंदे को तलाश होती है अल्लाह ताला उसे देता है, वो ढूंढ लेता है। अगर आपकी लैब में फॉर एग्जांपल मैंने वही बात की है, आप इस अगर वर्स्ट सिचुएशन है, पहली बात तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो जाती है बंदे की। वर्स्ट सिचुएशन के अंदर अगर एडजस्टमेंट किसी लैब के अंदर प्रैक्टिकली नहीं हो रही, आप ऑनलाइन रिसोर्सेज से उन प्रैक्टिकल टेक्निक्स के अंदर फुल कमांड हासिल करने की कोशिश करें, ये बंदे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एक एक चीज पढ़ी है, लिटरली एक एक। हम आज भी कोई नया एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, हम वर्चुअल टूर्स देखते हैं उनके कैसे कैसे हो रही है। इवन के फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज स्पेसिफिक इंजाइम लेना चाह रहे हैं किसी स्पेसिफिक टेक्निक के लिए, उनकी अपनी वेबसाइट्स के ऊपर स्पेसिफिक काइंड ऑफ वीडियोस पड़ी होती हैं कि हमने ये किस तरह किया जाता है, किस तरह काम आता है। तो वो लेम एक्सक्यूज नहीं है, आप वहां से भी सीख सकते हैं। और उसके बाद मैंने जैसे कहा, आप सीनियर्स के साथ कांटेक्ट में रहें कि सर जी ये कैसे होता है, थोड़ा सा मुझे भी गाइड कर दें। कभी वो आउट ऑफ द वे आपको कह सकते हैं कि आप मतलब आए, हम आपको दिखा देते हैं, हम प्रैक्टिकली नहीं करवा सकते, हम दिखा देते हैं आपको। तो ये ना होने से होना बहुत ज्यादा बेहतर है। तो बीइंग एन अंडर ग्रेड स्टूडेंट, आप अपने आप को अपनी ग्रिप नॉलेज की बहुत अच्छी करें और एक्सपीरियंस जितना हो सकता है हासिल करने की कोशिश करें। ना होने से होना बहुत बेहतर होगा। Okay, sir, thank you very much. Sir, I have a question. My name is Hassan Mahmood Sadat. जी जी। Sir, you say that to polish yourself by to learn new skills in your field, जी like in Pakistan, especially in developing countries, जी। people not focus on this. Then Not how? focus on what? Not focus on books. हाँ 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 जी। हाउ की Then हाँ हाँ जी then by this way. जी। So how to develop new skills in our field? जी मैंने इस को बयान करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद मैं एक मुतासिर कुन तरीके से बयान नहीं कर सका। वो आप इस तरह कर सकते हैं भाई, अभी फॉर एग्जांपल ये जो दौर आ रहा है ना, डेटा साइंस का आ रहा है। डेटा साइंस की जॉब्स 2014 तक हाईएस्ट पेड जो जॉब्स हैं आने वाले टाइम में डेटा साइंटिस्ट की हैं। डेटा साइंटिस्ट मींस बायोइन्फॉर्मेटिशियन जो है, जो जनरेट, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर बंदों की जरूरत नहीं पड़ी नहीं एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए मशीन्स इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी हैं, आपको आप सिर्फ एक डीएनए का जो है ना स्पेसिफिक 2 माइक्रोलीटर डालते हैं और वो आपको सारा सीक्वेंस करके बिना अलाइन करके एक एक चीज को प्रोड्यूस कर देता है। बंच ऑफ डाटा होता है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, उसके साथ खेलना कैसे, उससे इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, बायोइन्फॉर्मेटिशियन, डाटा साइंटिस्ट, ये उनकी जॉब्स हैं। तो फॉर एग्जांपल ये डाटा साइंस न्यू स्किल है। बायो इन्फॉर्मेटिक आप सिर्फ एक कोर्स पढ़ेंगे बायो टेक्नोलॉजी में, लेकिन आप डाटा साइंस के भाई इतना कोर्सेज पढ़े हैं ऑनलाइन, आपको किसी ABCD की जरूरत नहीं है, किसी फैसल, हसन, अहमद, किसी की भी जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन कोर्सेज में जाएं, पर्ल पाइथन है, उसकी आर प्रोग्रामिंग है, उसकी ये टेक्निक्स हैं, न्यू स्किल्स हैं। अगर आपको ड्यूरिंग योर अंडरग्रेड आप पाइथन पे, पर्ल पे, ये 2 डाटा साइंस की एक लैंग्वेज है जिसमें आप डाटा साइंस को मैनिपुलेट करते हैं, आप अगर इन 2 टेक्निक्स के ऊपर काम कर लेते हैं और कुछ भी नहीं करते, मैं आपको दावे से कहता हूं आप इस अपनी अंडर ग्रेजुएशन के बाद आपकी नो मैटर जितनी CGPA है, आपको इसके ऊपर कमांड हासिल है इन 2 चीजों के ऊपर, और आपने किसी भी स्कॉलरशिप की जस्ट प्री रेक्विजिट चीजें पूरी हैं आपकी। फॉर एग्जाम्पल आपकी डिग्री है पढ़ी, आपके अगर वो लैंग्वेज कोर्स मांग रहे हैं वो है पढ़ा, और ये एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, यही सिर्फ 2, आप आर प्रोग्रामिंग और जो मैंने दूसरी पाइथन, पर्ल वगैरह, ये कोई डाटा साइंस की लैंग्वेज स्टफ है, ये स्किल्स हासिल कर लेते हैं जो 100% ऑनलाइन चीजें पढ़ी हैं, फ्री कोर्सेज पढ़े हैं। मुझे कहना कि फैसल डॉक्टर साहब आपने कहा था कि ये कर लेना तो आपको कोई भी स्कॉलरशिप मिल जाए, आपको ना मिले तो फिर मुझे आप बताइएगा। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने जैसे आपको कहा है, हर चीज अवेलेबल है। आज हम डेवलपिंग कंट्री से हैं, हम भी उसी से हैं, उसी से मैं भी उठ के कहीं आया हूँ।
और भी लोग हैं इधर दुनिया में, कहीं कहाँ बैठे हैं, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में बैठे हैं, तो हर कोई वे ढूंढ लेता है। तो मैंने कहा है आप दूसरों की प्रोफाइल को देखें, आप लिंक्डइन पे जाएं, एक बंदा भाई फॉर एग्जांपल यूएसए की साइंटिस्ट की पोजीशन पे फलां जगह के ऊपर काम कर रहा है, और वो उसकी प्रोफाइल में ऐसा क्या है भाई, वहां पे उसने सारी अपनी जो स्किल्स हैं लिस्ट की होंगी। व्हाई नॉट यू, यू हैव टू सी देम, यू हैव टू सी व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स ही पोजेसेस, व्हाई नॉट आई। फिर आप सर्च करें कि मैं उन स्किल्स को कहाँ कहाँ से हासिल कर सकता हूँ, फिर उसके ऊपर वर्कआउट शुरू कर दें। तो ये चीज अचीवेबल है। इन स्किल्स को बहुत सारे तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। एक्स्ट्रा कोर्सेज आप खुद से कर सकते हैं जो आपकी प्रोफाइल को दूसरों की प्रोफाइल से अमेजिंग वे से डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस क्रिएट कर देंगे, और वो स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए बेस्ट होगा। एनीवन एल्स? जी रुकैया, प्लीज आस्क। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त बीएस बायोटेक 8th सेमेस्टर में हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आफ्टर बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनके अंदर हम मास्टर्स कर सकते हैं? ऐसी कौन सी रिलेटेड फील्ड्स हैं जिनका अच्छा स्कोप भी है? और जो बेसिक क्वेश्चन है मेरा वो ये है कि अगर हम एक सब्जेक्ट को चूज भी कर लेते हैं, वी स्टिल डोंट नो कि ये सब्जेक्ट में डिग्री करने के बाद हम हमारा वर्क फील्ड क्या होगा, कैसा होगा। लाइक स्टडीज हम डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, उसके बाद हमें ये नहीं पता कि एक्चुअली हमारी वर्क लाइफ कैसी होगी। सर काइंडली इसके बारे में बताएं कि बायोटेक का तो हमें पता चल गया, लेकिन इससे रिलेटेड फील्ड्स आगे कौन सी है जिसमें हम मास्टर्स कर सकते हैं, और उसके बाद हमारी वर्क लाइफ कैसी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और वालेकुम सलाम। जो बायोटेक्नोलॉजी के बाद फील्ड्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी एक ब्रॉड फील्ड है। आप इसमें सब कोर्सेज पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड कोर्स भी पढ़ते होंगे, आप इम्यूनोलॉजी के भी बेसिक्स कोर्सेज पढ़ते होंगे, आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स की भी बेसिक कोर्सेज पढ़ते होंगे। तो ये सारी आपकी फील्ड्स हैं जिनमें आप जा सकती हैं। मैं जो पर्सनली, जो अगर कोई कहता है कि फैसल यू हैव another chance if you want to do another masters or PhD, जो डेटा साइंस है ना, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, आने वाले टाइम के अंदर जिस तरह अब टेक्नोलॉजी ने ओवरकम कर लिया हर एक चीज को, आने वाले टाइम के अंदर, और आप किसी भी रीसेंट आर्टिकल्स एनालिस्ट के पढ़ लें, डेटा साइंटिस्ट की बहुत ज्यादा दुनिया में डिमांड है। चाहे एक बंदे ने कंप्यूटर साइंस में काम किया है और वो डेटा साइंटिस्ट है बहुत अच्छा सा, वो आज हॉस्पिटल्स में भी बैठे हैं, वो बैंकिंग सेक्टर में भी बैठे हैं, वो XYZ कोई भी सेक्टर उठा लें, कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, आप जहां पे भी देख लें, कोई भी लैब्स हैं, डेटा साइंटिस्ट की उनको जरूरत है, क्योंकि डेटा इतना ज्यादा जनरेट हो चुका है, उसको संभालने के लिए बंदे नहीं है उनके पास, ठीक है ना। और उनके लिए ये स्पेसिफिक स्किल्स है, मैंने जैसे कहा लैंग्वेज स्किल्स आप सीख लें, कोडिंग लैंग्वेज है ये, बेसिकली कोडिंग लैंग्वेजेस इनको कहते हैं, तो आप इनके ऊपर कमांड हासिल कर लें। आप ये स्पेसिफिक बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जा सकती हैं, जो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको वेट लैब एक्सपेरिमेंटल वर्क करने का बहुत ज्यादा शौक है, हर बंदे का जिस तरह शौक होता है, उसमें अगर जाना चाहती हैं आप माइक्रोबायोलॉजी में चली जाएं, इम्यूनोलॉजी का बहुत अच्छा ब्रॉड फील्ड है, आप उसमें जा सकती हैं। तो ये समहाउ ये बहुत अच्छे इमर्जिंग फील्ड्स हैं, और इनके अंदर मजीद आ जाती हैं। फिर कोई करते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस में कर रहे होते हैं, कोई जूनोटिक डिजीज में कर रहे होते हैं, कोई एपिडेमियोलॉजी में चले जाते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में, वो एक स्पेसिफिक ब्रॉड सेंस आ जाती है। लेकिन आप जिन में भी जाएं, इनमें से आप देख लें, माइक्रोबायोलॉजी में जाना चाहती हैं, इम्यूनोलॉजी में जाना चाहती हैं, आप एपिडेमियोलॉजी में जाना चाहती हैं, जिसमें जाना चाहें, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, अगर आप चाहती हैं आने वाले टाइम के अंदर अपनी पोजीशन को वर्थी बनाएं, और कहते हैं ना कि कोई काम इंसान करे तो जब तक ऐसा हो कि उसके बगैर वो काम ना हो, उसकी जरूरत हो। अगर आप चाहती हैं कि आप लोगों के लिए, किसी इंस्टीट्यूट के लिए जरूरत हो, आपके बगैर वो मतलब उनको झटका लगे कि ये बंदा गायब हो गया, कहाँ गया है, आप अपनी इन स्किल्स को इंप्रूव कर लें। चाहे आप माइक्रोबायोलॉजी में जाएं, इम्यूनोलॉजी में जाएं, एपिडेमियोलॉजी में जाएं, ये जो थोड़ी सी बायोइन्फॉर्मेटिक्स की स्किल्स है ना, और इनमें ये 2-3 कोडिंग लैंग्वेजेस हैं, ये टोटली ऑनलाइन 100% फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, आपको ऐसे हाथ पकड़ के सिखाएंगे, इतना अच्छा एक्सप्लेन की हुई चीजें। तो उनको ना आप काइंडली खुद से लर्न करना शुरू करें, तो जिस भी फील्ड में आप आने उसमें जाएंगी तो आपको ये बहुत ज्यादा कैश आउट करेगा।
सर उसके लिए हमें मास्टर्स इनफ नहीं होगा, लाइक वो पर्सनली हमें खुद से जो है वो ये स्किल्स को गेन करना है कोर्सेज करके। आपको मास्टर्स में कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे, 100% कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे, लेकिन अगर आउट ऑफ द वे जाना चाहती हैं तो खुद से अगर थोड़ा ज्यादा सीख लेंगी तो बेहतर होगा। क्योंकि आज हमने जितनी भी बातें की हैं कि आपने दूसरों से डिफरेंस ज्यादा कैसे क्रिएट अपनी लाइफ में करना है, इम्पैक्ट करना है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बियॉन्ड द लिमिट्स जाना पड़ेगा। और इंडियन है जो जी सर। इंडियन, जी सॉरी जी। इंडियन एक दूसरे को इतना ज्यादा गाइड करते हैं ना, खासकर सीनियर्स, और वो मतलब है जहाँ पे फॉर एग्जांपल वो बैठा होगा खुद, वो 10 बंदों को और बुला लेगा, वो ऐसी ऐसी अंदर की चीजें बताएगा जो आम पब्लिक को नहीं पता होगी। और हम लोग वो नहीं करते, हम पाकिस्तानी। मेरी जो आज इस सेशन का मकसद है सिर्फ और सिर्फ ये, अगर हम आज अहद कर लेना, हम ये इस टाइम पार्टिसिपेंट अगर बैठे हैं 78 बंदे भी बैठे हैं, हम अहद कर लें हमने डिफरेंट करके कुछ, हर बंदे ने बाहर का स्कॉलरशिप विन करना है, मैं गारंटी देता हूँ हो जाएगा। जी सर, बेसिक इशू यही मुझे इस वक्त आ रहा है कि अभी राइट टाइम यही है कि हम मास्टर्स के लिए अप्लाई करें, बट आई डोंट नो वेयर टू चूज, मतलब किस सब्जेक्ट को चूज करना है, किस प्लेस को चूज करना है। उसकी रीजन ये है कि मुझे जो है वो सीनियर्स का कोई खास इंटरेक्शन नहीं है, कोविड भी आ गया है और हमें खास पता नहीं है कि हमारी फील्ड से रिलेटेड आगे वर्क लाइफ कैसी होगी। तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन इसीलिए किया था कि मुझे थोड़ा पता चले कि वेयर शुड आई एक्चुअली अप्लाई। वर्क लाइफ तो आपकी उस टाइम ही बेस्ट होगी ना जब आपको काम करने का स्पेसिफिक चीज में मजा आता है। आपको अगर इम्यूनोलॉजी में पढ़ने का मजा आता है तो आप इम्यूनोलॉजी में जाएं, बेस्ट है इम्यूनोलॉजी, उससे बड़ी अच्छी कोई फील्ड ही नहीं है। आप जितने भी बड़े ज्यादातर नोबेल लॉरिएट्स देख लें, इम्यूनोलॉजिस्ट होंगे, उनका बैकग्राउंड इम्यूनोलॉजिस्ट का होगा, तो इम्यूनोलॉजी का होगा, तो आप इम्यूनोलॉजी में चली जाएं, बहुत अच्छा फील्ड है। आप इसके बाद कल को इम्यूनोलॉजी में आप मास्टर्स करती हैं, कल को आप आगे कैंसर रिसर्च में इम्यूनोलॉजी साइड पे आ जाती हैं, क्योंकि इम्यूनो ऑन्कोलॉजी भी एक फील्ड है और वो बहुत ही प्यारा फील्ड है, तो आप उसमें आ सकती हैं। साथ में आपने एक्स्ट्रा स्किल्स अपनी खुद बनानी है, आप डाटा साइंस की भी चीजें खुद से सीख रही हैं माशाल्लाह से, फिर अगर तो वो आपको और ज्यादा मतलब छक्का लगा देगा। तो आई थिंक सो आप अपना थोड़ा सा इंक्लाइन वे देखें किस में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। आपको कंपैरेटिवली माइक्रोबायोलॉजी चीजें पढ़ने का मजा आता है, इम्यूनोलॉजी का मैं वैसे कहूंगा डॉक्टर नजीब एक हैं, आपने शायद उनको देखा होगा, वो जी यूएस, सर देखें। आप उनके लेक्चर 2-3 सुन लें और वो फ्री लेक्चर पढ़े यूट्यूब पे। वो इम्यूनोलॉजी को इतना बंदा प्यारा पढ़ाता है ना, कहता है कि बंदा ना कि जैसे सेल्स आपस में खेल रहे हैं और मतलब आपस में कैसे बातें कर रहे हैं, इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं। तो मुझे तो इम्यूनोलॉजी बहुत पसंद है और मुझे उसी टाइम इंटरेस्ट डेवलप हुआ था जब मैंने उस बंदे को सुना था। तो आप उसको सुन लें और देख लें आप उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तो आई थिंक इम्यूनोलॉजी इज आल्सो वेरी नाइस फील्ड। ऑलराइट, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर एक्चुअली मुझे पूछना था कि बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम इंडस्ट्रियल फील्ड में देखें तो मतलब मेरा इंटरेस्ट जो है वो इंडस्ट्री की तरफ है। तो हम लोगों ने रिसेंटली अभी मतलब हमें अपॉर्चुनिटी भी दी थी सर ने, लाइक हमने थोड़ी देर अभी हमारा इनिशिएटिव ही था कि हम पहले सीनियर्स को ऑब्जर्व कर रहे थे। हमने वेस्ट वाटर पे काम था ना, एलजी की स्ट्रेन्स जो हैं डिफरेंट, उनको लेके वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे। तो इसके स्कोप के बारे में आप बताएं कि अगर हम एमएस में इसको आगे बढ़ाना चाहें तो। बहुत अच्छी बात है। मैंने पहले यही कहा था, अगर आपका पैशन और प्रोफेशन सेम है, इससे खूबसूरत जिंदगी है नहीं। और अगर आपको इंडस्ट्री में जाने का शौक है तो बहुत अच्छी बात है। आप मतलब है एक बंदा मास्टर्स पीएचडी और इन चीजों में पढ़ गया और दूसरे बंदे को इंडस्ट्री का शौक है, वही वो एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, आपका बूम करने का चांसेस बहुत ज्यादा है। मींस यू हैव एक्सपीरियंस, यू हैव योर बैचलर्स डिग्री, आपके पास एक्सपीरियंस है और आपका शौक है उस चीज में, तो उसको परसू करें। उसमें कोई मतलब मुजायका नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस से अल्टरनेटिव कोई है ही नहीं। तो जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा बहुत अच्छी बात है। और ये जो आप स्पेसिफिक आपने टॉपिक बताया है बिल्कुल वर्ती है। अगर उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छी रिसर्च चल रही है, उसके ऊपर अच्छा काम हो रहा है और आपको उसमें कंटेंटमेंट मिलती है काम करने में, तो देयर इज नथिंग बैड टू डू दैट। ओके सर, थैंक यू। जी खुशबू, you have question? Okay, जी समैया, please ask.
सर मुझे ये पूछना था कि जैसे हमारे वहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क है और उधर की स्टडी में जस्ट यही मेन मतलब डिफरेंस है, जिसकी वजह से हमारे जो वहाँ के स्टूडेंट अगर स्टडी करके आते हैं तो हम उन्हें ज़्यादा वैल्यू करते हैं। मुझे ये पूछना था कि जैसे पाकिस्तान से वहाँ जाके स्टडी लोग करते हैं तो वो लोग भी क्या हमारे स्टूडेंट को वैल्यू करते हैं? अगर करते हैं तो किस बेस पे करते हैं वैल्यू? हाँ जी, पहली बात तो वैल्यू तो करते हैं तो आपको सिलेक्ट करते हैं, और अगर सिलेक्ट करते हैं मतलब आप अपने आप को उस काबिल बनाते हैं तो सिलेक्ट करते हैं। और जब एक बंदा सिलेक्ट कर लेते हैं, कभी भी साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर किसी तरह की भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। आइदर यू आर अ मेल और फीमेल, आइदर यू आर फ्रॉम पाकिस्तान और सो कॉल्ड फ्रॉम अमेरिका, नेवर। मसला ये है, हमें अपने आप को उस कैपेबल बनाना है। हमारे पास ठीक है प्रैक्टिकल काम करने का इतना ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, इवन के मास्टर्स डिग्री तक भी रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। तो लेकिन हम अपनी, फॉर एग्जांपल अब मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो इंटरव्यू के दौरान मैं तो आपको नहीं कहूंगा कि मुझे अभी फलां टेक्निक भी करके दिखाओ ना, एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली करके दिखाओ, नहीं। मैं तो आपको असेस जो करूंगा वो मैं आपको क्रॉस डायलेक्ट से करूंगा ना। आपका मैं पूछूंगा, हाँ भी ये काम होता है, कैसे होता है, ये चीज कैसे करते हो आप, ये चीज कैसे करते हो। और वो चीज तो उतना है जितना हम ज्यादा अपने विजन को डीप नॉलेज गेन करके हासिल कर सकते हैं। और जो बंदा एक अच्छा कम्युनिकेशन करके अपनी साइंटिफिक बात को दूसरे तक पहुंचा सकता है, वो किसी बात में मार नहीं खाएगा। प्रैक्टिकल काम सीखना, किसी भी टेक्निक को उठा ले, हम बड़ा हवा बनाया हुआ है ना हमने कि ये प्रैक्टिकल काम यार बड़ा मुश्किल होता है, पता नहीं किस तरह। ये एक दिन का काम भी नहीं होता। अगर आपको एक अच्छा बंदा सिखाने वाला हो, आपकी अगर इन डेप्थ नॉलेज है उस स्पेसिफिक चीज के बारे में, ये वर्क उनके ऊपर गेन एक्सपीरियंस करना ये बड़ी बात नहीं है, ये आप इजीली कर लेंगी। ये इवन के इन्हें पता होता है जब ये बुला रहे होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैं इवन के पोस्ट डॉक के लिए आया ना यहाँ पे, ये स्पेसिफिक इधर जॉब के लिए, तो इधर यहाँ पे काम हो रहा था जेब्रा फिश एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म, उसके ऊपर इन विवो स्टडी मैंने जिंदगी में नहीं किया। तो उन्होंने यार पूछा कि आपने ये पहले काम किया था, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं किया। फिर उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, हर तरह से पूछे, वो मैंने पहले से उसके ऊपर स्टडी की हुई थी। उन्होंने कहा यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना कोई बड़ी बात नहीं है, वो हम आपको ट्रेन कर देंगे, लेकिन बेसिकली वो नॉलेज देखते हैं। तो आपका जिस जगह पर आप जाना चाहती हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो लोग किस तरह के बंदों को रिक्रूट करते हैं। और वो कैसे पता चलेगा, आप उनकी देखें कि रिक्वायरमेंट में मांगते क्या क्या है, नंबर 1। फिर उनके जो प्रीवियस एलुमनाइज होते हैं उनकी प्रोफाइल, वो भी लोग इंटरव्यू अपनी वेबसाइट पे डाले थे, उनकी प्रोफाइल में क्या क्या है जिस वजह से उन्होंने उन्हें सिलेक्ट किया। तो आप अभी आपके पास टाइम है, उन स्किल्स को अपनी लाइफ के अंदर ले आए, तो आप भी उसी जगह पे होंगी। Sir, will this session be like close in 2 minutes? Nope, I've just scheduled as for 2 hours. If anyone has question they can Okay. ask. Okay. Thank you, sir. Thank you. जी स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों के और फर्दर क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आस्क। बाकी सबको लगता है मैं अच्छा नहीं लगा, या बाकी सब समझ गए हैं क्या करना है? सर मेरा सर ये सवाल है कि हमें ना बेसिक चीज़ों का नहीं पता होता। मतलब अगर मैं अपना बोलूँ ना, सिर्फ वही कोर्स वर्क पढ़ा हुआ है जो टीचर पढ़ाते हैं, इंटर्नशिप भी नहीं है इस तरह की। जी, तो कि अगर कोई चांस है मैं कोई स्कॉलरशिप मिल जाए, अगर वो है तो मतलब कि इतना नहीं पता होता कि अप्लाई किस तरह करना है या किस वे के थ्रू, या ये प्रोसीजर अगर थोड़ा सा बता दें। जी। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। अब मैं हफ़ाज़ कराम की बहुत इज्जत करता हूँ, अल्लाह ताला ने उनके दिलों में कुरान मजीद रखा हुआ है, तो ये एक इससे बड़ी सादत नहीं। मैं तो हमेशा उन्हें दुआ का कहता हूँ। आप तो माशाल्लाह इतना एक मकबूल हस्ती हैं अल्लाह के नज़दीक, तो आपको तो परेशान होना ही नहीं चाहिए भाई। ये वही चीज़ है हाफिज साहब के, इंसान को जब भूख लगती है ना, कुछ ना भी हो ना, वो इवन के पत्ते भी खा लेता है अगर कोई चीज भी ना मिले। तो इंसान तो अल्लाह ताला ने उस तरह की एक मोल्डेड शख्सियत रखी है कि किसी तरह के भी इन्वायरमेंट में उसने अपने आप को एडजस्ट कर लेना है।
तो ये अपने ऊपर है। आप इस टाइम देखेंगे पाकिस्तानी ही दुनिया की हर एक कोने में पहुंचे हुए हैं और बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे पहुंचे हुए हैं। वो भी हम में से ही हैं जो पहुंचे हुए हैं, आप में से ही हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ वही सारी बातें, स्कॉलरशिप्स भरे पड़े हैं दुनिया में, इतने स्कॉलरशिप्स हैं। आप एक टाइम आएगा, मैंने शुरू में कहा है कि आप सब मुझसे प्रॉमिस करें कि आप इन चीजों के ऊपर काम कर लेंगे, आप इन चीजों को अपनी प्रोफाइल में लेके आए। मैं आपको शर्तिया कहता हूँ, अपॉर्चुनिटीज बहुत होंगी और फिर आप पूछेंगे डॉक्टर हसन से कि सर ये अपॉर्चुनिटीज हैं, 6-7 स्कॉलरशिप हैं, मैं इनमें से किसको मतलब है अवेल करूं। ये एक टाइम आएगा, ये मेरी बात लिख लीजिएगा आप, अगर आप इन चीजों के ऊपर काम कर लें। स्कॉलरशिप्स बेतहाशा हैं, रिसोर्सेज ढूंढना ये हमारी अगर मतलब ना अहली है, हम कहते हैं कि रिसोर्सेज का हमें पता नहीं है, हम मतलब है और बहुत सारे काम कर लेते हैं अननेसेसरी, लेकिन हम अगर जिस चीज में शौक होगा तो उसमें जंप लगाएंगे ना, हमें कोई मतलब ऐसे प्लेट में उठा के तो कोई नहीं दे देगा। और स्कॉलरशिप तो मैं कहता हूँ ऐसे है कि जैसे एक प्रेस्टिजियस है, नो डाउट 100% प्रेस्टिजियस, आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ऑनर की बात होती है, आप फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से आजाद हो गए। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ ये एक फकीर की तरह होता है कि जो जगह हर बंदे से मांगता है और जो दे दे तो उसको दुआ देता है, नहीं देता तो मायूस नहीं होता, अगली जगह पे जाता जरूर है। तो स्कॉलरशिप भाई अप्लाई करते हैं, बेतहाशा स्कॉलरशिप है, इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म है बताने के लिए स्कॉलरशिप्स का कि बंदा थक जाए। मैंने वो यूट्यूब के ऊपर उसके ऊपर सेशंस पहले भी किए हुए हैं कि कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं और कैसे कैसे ऐसे स्कॉलरशिप्स को भी ढूंढा जाता है किसी को पता भी नहीं चल सकता जिसका, और कैसे कैसे आप अप्रोच करते हैं ऐसे बंदों को, प्रोफेसर्स को, कि अभी उनकी फंडिंग मंजूर हुई होती है, किसी को पता नहीं होता, उनकी फंडिंग अप्रूव हो के मतलब उन्होंने अनाउंस करनी होती है पोजीशन, लेकिन आप उससे पहले, अनाउंस करने से पहले उसको अप्रोच कर देते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ओपन स्कॉलरशिप्स हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं, कोई कमी नहीं है। तो इनके ऊपर सेशंस मेरे ऑलरेडी पड़े भी हुए हैं और मजीद भी इंशाल्लाह मैं करता रहूंगा ताकि किसी का भला हो जाए। जो आपके सवाल का जवाब है भाई, वो जितना भूख होगी उतना मिलेगा आपको, और अपने अंदर भूख पैदा करें एक चीज को हासिल करने की। वो जात तो कौन फायकून वाली है, वो तो देखती नहीं है कौन कहाँ से आ रहा है। अगर ये मसला होता मैं कभी अपने इलाके से बाहर ना आता। तो ये अल्लाह ताला की जात बड़ी बेनियाज जात है, आप अपने अंदर एक थर्स्ट पैदा करें, भूख पैदा करें, ऐसी ऐसी जगहों पे आपके लेके जाएगा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू। जी, एनी अदर स्टूडेंट? प्लीज आप लोग इसका मैक्सिमम फायदा लें, और सर ने हमें टाइम दिया है तो प्लीज आपके जितने भी माइंड में क्वेश्चंस हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी सर मैंने ये पूछना है कि अगर हम ट्रांसक्रिप्टोमिक्स में अगर फर्दर परस्यू करना चाहते हैं, लेकिन हम पाइथन या इस तरह की कोडिंग लैंग्वेजेस को नहीं समझ पा रहे, तो हम क्या उसमें कर सकते हैं परस्यू ट्रांसक्रिप्टोमिक्स में? कोडिंग लैंग्वेज को हम ट्राई किया है लेकिन नहीं हम उसको कमांड में लेके आ रहे, तो क्या हम कर सकते हैं ट्रांसक्रिप्टोमिक्स में? थैंक यू। ट्रस्ट जो क्वेश्चन है ना आपका, बेसिकली मैंने जिस तरह पहले शुरू में कहा था कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च हो रही है, जो हाई फाई लैब्स है ना, अगर आपकी फॉर एग्जांपल बाहर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में लैब्स में सिलेक्शन होती है, तो इन्होंने ना हर बंदा स्पेसिफिक रखा हुआ है। उन्होंने डाटा साइंटिस्ट, बायोइन्फॉर्मेटिशियन भी रखा हुआ है, उन्होंने वेट लैब एक्सपेरिमेंटेशन के लिए अलहदा बंदे रखे हुए हैं, और इस तरह की एक उन्होंने स्पेसिफिक ना सेक्शंस बनाए हुए हैं। तो अगर आपको लगता है आप वेट लैब के वर्क को करने, वेट लैब मींस प्रैक्टिकल वर्क को करने में आपकी कमांड अच्छी है, लेकिन किसी वजह से आपको साइंस उसका कोडिंग लैंग्वेज मुश्किल लग रही है या वो नहीं उस तरह की आप ग्रिप हासिल कर लें, तो इतना बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है, इजीली वर्केबल है चीज।
और ये तो मैंने इसलिए कहा है कि इससे ये होगा, फॉर एग्जाम्पल आप देखें, आप अपनी एक लैब है जिसके अंदर आप अप्लाई करना चाहती हैं, आपको वेट लैब का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आपका नॉलेज भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, इंशाल्लाह सिलेक्शन के 80% चांसेस, आप चाहती हैं 100% चांसेस हो। मैंने भाई इसी जगह पे ही करना है, मैंने हार्वर्ड में ही करना है, और मुझे 100% चाहिए चाहिए, जो कुछ भी हो जाए, कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना फिर। तो उसके लिए यही है, आप एक बंदे की पूरी जॉब ही खत्म कर रही हैं। आपको डेटा साइंटिस्ट साइंस का काम बहुत अच्छा आ रहा है, कोडिंग लैंग्वेज पे भी कमांड हासिल है आपको, तो उससे क्या होगा, उन्हें डेटा साइंस वाले बंदे को रिक्रूट करने की जरूरत ही नहीं है, वो दोनों काम आपसे ले सकते हैं, उन्होंने तो 100% आपको सिलेक्ट करना है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है, अगर वो नहीं भी हो रहा तो ट्रांसक्रिप्टोमिक्स स्टिल वर्क्स, because if you really get selected in any good lab, they have a specific people who do these kind of a data science work, and it won't have any obstacle in your own career, but it will be a very plus point if you will still manage to learn it. Sir, thanks. और कोई बाई मैन? जी, फर्दर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आस्क। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक ये भी कॉन्सेप्ट एक्चुअली मेरे माइंड में है कि जो हमने ये 4 साल डिग्री ली है तो उसमें हमारा इतना नॉलेज लेवल नहीं है कि हम किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तो हम उसमें सेलेक्ट हो जाएं। नो डाउट कि हमें खुद भी कुछ एफर्ट करनी चाहिए, लेकिन हमें जो यहाँ पे हमने 40-42 कोर्स हमने पढ़े हैं, तो उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना और फिर उसको आगे लेके जाना और स्कॉलरशिप में तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। हम लोग इसको अवेल करने से पहले ही माइंड में आ जाता है कि दिस इज नॉट फॉर मी। तो जी, इस माइंडसेट के लिए फिर हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये लोग पूछते हुए बहुत सोचते हैं, और माशाल्लाह आपकी हिम्मत है, 1 घंटा 37 मिनट के बाद आपने किसी तरह से उस शाइनेस को खत्म करके बहादुर बन के आपने क्वेश्चन पूछा है। तो इसका जवाब यही है, मेरे सीनियर हैं इस टाइम, वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं पिशावर यूनिवर्सिटी में, तो मुझे वो कहते थे कि फैसल, अप्लाई ना करने से अप्लाई करना बेहतर है। नंबर 1, कहते हैं कि अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे, मैं कहता था यार 2 पोजीशंस हैं सिर्फ जॉब की इस स्कॉलरशिप के लिए, पूरी दुनिया पड़ी है, तो मुझे ही क्यों उठाएंगे। तो वो कहते हैं अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे ना, आप गेम से 100% आउट है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, आप 50% इन हो गए हैं, अब 50% आपकी कैपेबिलिटीज हैं और आपकी काइंड ऑफ लक है, और ये लक है ना, ये बहुत बड़ी बला चीज है, तोप चीज है। तो ये जब इंसान नीयत का साफ है, ये पहुंचा देती है कहीं पे भी। तो इस मामले में घबराना नहीं है, अप्लाई करते हैं। और एक फॉर आपकी डिग्री हो गई, आप कह रही हैं मुझे इतना अच्छी कमांड हासिल नहीं है, उसके ऊपर इतना ज्यादा काइंड ऑफ हमें नॉलेज किसी वजह से नहीं गेन कर सकी, जो भी है, आप उसका सिंपल सा हल है, अपनी सीवी को इंप्रेसिव बनाने की कोशिश करें। इंप्रेसिव मींस कि उसका जो लेआउट है ना, उसको बड़ा इंप्रेसिव बना लें। और आप किसी को कम्युनिकेट कर रही हैं, आप किसी प्रोफेसर को आप रीच आउट करना चाहें, जारी बात है ईमेल लिखेंगी, आपका जो ईमेल लिखने का स्टाइल है, एक उसका जो फॉर्मेट है, वो इतना इंप्रेसिव, वो दूसरे को लगेगा बहुत प्रोफेशनल इंसान है। और तीसरी चीज, आप कोई लैंग्वेज स्किल हासिल कर लें। मैं आपको फिर भी कहता हूं, आप ये 3 चीजें कर लें और आपके अंदर एक पैशन है किसी स्कॉलरशिप को लेने का, मिल जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन आपका, जो स्पेसिफिक 42 कोर्सेज हैं पढ़े हैं, तो इनमें से किसको परसू आगे करना चाहिए, तो इसका जवाब थोड़ी देर पहले दिया था। आप अपना इंटरेस्ट देखने की कोशिश करें, कोई एक ऐसा 1-2 सब्जेक्ट होंगे जिसको पढ़ने में आपको अच्छा लगता होगा, मतलब ज्यादा दिमाग पे बोझ नहीं पड़ता होगा। अब ऐसा ना कहिएगा मुतालिया पाकिस्तानी इस्लामियात पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, बात हो रही है कैरियर की, आगे भी लेके जाना है ना अब। तो थोड़ा सा मतलब है, अपनी इंक्लाइनमेंट देख लें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में आप इजी कंफर्टेबल फील करती हैं,
और जो रहेगी बात स्कॉलरशिप्स की, स्कॉलरशिप्स यकीन माने बहुत ज्यादा है। हम पाकिस्तानी डरते हैं कि हमें किसने देना है यार, हम तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारी CGPA 2.7 है, 8 है, और MA हमने बस डिग्री की है पास करने के लिए, बट सर्टिफिकेट अब हमें कौन दे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमसे ज्यादा किसी भी आप इधर US में देख लें, हर जगह पे इंडियन पड़े हुए हैं। एक तो वैसे उनकी तादाद बहुत है, लेकिन पड़े हुए हैं, अप्लाई कर देते हैं। ये अप्लाई करें, और कोई भी लैंग्वेज सर्टिफिकेट कोर्स में उसमें अच्छे स्कोर कर लें। अगर अगर आपको लग रहा है डिग्री उस तरह की नहीं हो सकी थी, हो गई है, लेकिन अब तो हो गई है, लैंग्वेज कोर्स है उसमें बहुत अच्छे स्कोर कर लें, इंशाल्लाह हो जाएगा। कोई इसमें वो नहीं है, बड़ी बात नहीं है कि ना हो जाएगा। सर डरने की एक ये भी वजह होती है कि हम जो हमारा पीरियड होता है जिसमें हम सारे कोर्स कवर कर रहे होते हैं, उसमें हमें एक तरह से जो पुरानी टेक्निक्स होती हैं वही बताई जा रही होती हैं। लेकिन जब हम किसी स्कॉलरशिप को अवेल करने का सोचते हैं या उसके लिए, तो फिर नई नई चीजें आती हैं जो कि कवर अप नहीं हो पाती। तो इसलिए फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज को छोड़ देते हैं कि नहीं हो पाएगा। जी, जो नई नई टेक्निक्स की बात कर रही हैं आप, दुनिया में किसी भी बड़ी सी बड़ी पोजीशन जॉब के लिए, लैब के लिए देख लें, बेसिक टेक्निक तो वही है, DNA वही DNA है, RNA वही RNA है। आपको अगर बेसिक टेक्निक्स का पता है ना, वो आपसे नई टेक्निक का एक्सपेक्ट एज सच नहीं कर रहे कि आपके उसके ऊपर कमांड हासिल हो। उनको भी पता है कि अंडर ग्रेजुएट का स्टूडेंट है, किस कंट्री से अप्लाई कर रहा है, हर एक चीज का पता होता है। जो बंदा रिक्रूट कर रहा होता है उसे 100% पता होता है एक एक चीज का। मसला ये है, मैंने जैसे पहले कहा है, स्कॉलरशिप लेना एक फकीर की मिसाल है। वो बुरा नहीं मानता अप्लाई करने के बाद, वो बुरा नहीं मानता कि कोई उसे देता है या नहीं देता, वो आगे जरूर अप्लाई करता रहता है, क्योंकि उसने तो घर पालना है ना। अगर आपने स्कॉलरशिप लेना है, अप्लाई करते रहना है, नंबर 1। नंबर 2, उस स्कॉलरशिप को लेने के लिए थोड़ा सा आपको डिफरेंट करना पड़ेगा, ऐसे कोई भी नहीं देगा, थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा। फकीर के अटायर देखें, कितना अच्छे से डायलॉग सीख के आता है और करके आता है, तो आपको भी कुछ करना पड़ेगा। और एक नंबर, आपको आज, हालांकि ये मेरे पूरे सेशन मैंने पहले का यूट्यूब पे पढ़े हैं, किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए बेस्ट वे क्या है। फॉर एग्जांपल, आज मिस तहरीम है, अप्लाई किया उन्होंने किसी पोजीशन के लिए, अल्लाह ताला ने अच्छा किया है, किस्मत में बंदे ने इनिशियल एप्लीकेशन उनकी पास आउट कर दिया, अब इंटरव्यू कह रहा है मैंने इंटरव्यू करना है। अब भाई तहरीम को नहीं पता, वो कर रहा है इन वीवो काम कर रहा है, वो पता नहीं नई नई टेक्निक कर रहा है, वो कन्फोकल माइक्रोस्कोपिंग कर रहा है, फ्लोरिसेंट ऐसे कर, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, अभी मुझे तो नहीं पता मैं क्या करूं उसका। और मैंने पोजीशन भी लेनी है, उसका बेहतरीन हल, और ये मतलब आजमूदा फार्मूला, कोई बंदा आपको कह रहा है ना कि मैंने तुम्हें इंटरव्यू के लिए लेना है, उसके आप रीसेंट रिसर्च पेपर देखें, रिसर्च पेपर वो क्या काम कर रहा है। अभी उस काम का आपको जरा भी नहीं पता, ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप एटलीस्ट उसके सारे रीसेंट रिसर्च पेपर डाउनलोड करें, उनकी आप डिस्कशन के पार्ट्स में जाएं, इंट्रोडक्शन पढ़ें, हाँ भी ये काम है इसका, अब्स्ट्रैक्ट पढ़ें, मतलब ये इसने किया है। इंट्रोडक्शन बहुत सिंपल होता है, वो तो हर बंदे को, मतलब आप उसकी एंड डिस्कशन पार्ट पढ़ें कि आने वाले टाइम के अंदर ये काम करना चाहते हैं, या एक अनएंसर्ड क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया होता, या वो सोच रहे होते हैं आगे हमने ये काम करेंगे, आप उनसे वो पूछ लें कि मेरे माइंड में सर ये भी है कि इस चीज के ऊपर ऐसे काम किया जा सकता है, या मैं ऐसा भी सोचता हूँ, सोचती हूँ। उन्हें पहली बात वो बहुत इंस्पायर होंगे इस चीज से कि यार इस बंदे ने आउट ऑफ द वे जाके मेरे आने वाले कामों के बारे में भी इसको आइडिया है। और दूसरा, वो इस चीज से खुश होगा कि इस बंदे ने एफर्ट की है, उसे पता होगा कि पता इसे भी नहीं है, पता हमें भी नहीं है, लेकिन वो एफर्ट देखेगा कि इस बंदे ने एफर्ट की है, तो एक बहुत प्लस पॉइंट होता है। और इंटरव्यूज को क्रैक करने के लिए भी मतलब इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो टेक्निक्स अगर आपको नहीं भी आती तो इतना बड़ा फ्लॉ नहीं है, आप उनके बारे में बेसिक्स तो पढ़ ही सकती हैं, बाकी सबको पता होता है कि कौन किस लेवल का बंदा है। ओके सर, थैंक यू।
Pakistan. जी हसन भाई, अभी आपने जो भी बात की है मुझे सिर्फ गिटार की आवाज आई है, आपकी आवाज नहीं है। दोबारा पूछ सकते हैं आप? Sir, I hope you enjoy class from Pakistan. आपका क्वेश्चन क्या है? जी sir. आपका क्वेश्चन क्या है? Sir, which field of the biotechnology plays most important role in the country progress? ये तो वही बात है कि हमारे मुल्क को इस टाइम कौन सा वजीर सही चला रहा है जिसकी ज्यादा अहमियत है। बायोटेक्नोलॉजी की जितनी भी फील्ड्स हैं, हर फील्ड की बहुत ज्यादा अहमियत है और हर जगह पे अहमियत है। किसी के बगैर दूसरी चीज, आप कोई भी प्रोजेक्ट उठा लेंगे रिसर्च बेस, बायोटेक्नोलॉजी के एक फील्ड के ऊपर अगर किसी को कमांड हासिल होगी दूसरे के ऊपर नहीं होगी तो वो आगे नहीं जा सकेगा। प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए हर एक चीज की, हर एक एस्पेक्ट की जरूरत होगी। सबकी बराबर इंपॉर्टेंस है, किसी की भी कम इंपॉर्टेंस नहीं है। दुनिया में जितने भी बंदों को नोबेल प्राइज मिले हैं, हर एक फील्ड के बंदे को मिले हैं। कोई नहीं है कि किसी को मैथ में ना मिला हो, किसी को XYZ किसी चीज में ना, सब में मिला है। किसी भी प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए अगर कोई बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट है, उसमें हर एक एस्पेक्ट को उठाया जाता है, चाहे वो इम्यूनोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, कोई भी फील्ड है, सबकी बराबर इंपॉर्टेंस है। हाँ, अगर आप कहते हैं कौन सा बहुत ज्यादा एप्लीकेबल आजकल चल रहा है और जो जिसकी बहुत ज्यादा पोजीशंस ऑफर होती हैं और ये वो, तो मैं कहूँगा माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, वो बहुत ज्यादा उसकी डिमांड है। Okay, sir. So while coming to the some specifics, your specialization in मुझे समझ नहीं आई हसन भाई, आपकी बात शोर आ रहा है। sir, your specialization मेरी in health. डॉक्टर हसन Yes, जी, sir. अच्छा मेरी स्पेशलाइजेशन भाई हीमाटोलॉजी में है। ऑन्कोलॉजी आप ब्रॉड विजन में कह सकते हैं, और हीमाटोलॉजी पे काम कर रहा हूँ। ह्यूमन कैंसर पे बेसिकली काम है और स्पेशलाइजेशन इम्यूनो ऑन्कोलॉजी है। Sir, and MS is necessary after masters in the field of biotechnology. MSc after masters? MS is necessary for the students For what? in the field of biotechnology. नहीं, आप मतलब उसका आगे क्या आप करना चाहते हैं? MS मतलब MS के बाद अगर कुछ करना चाहते हैं तो MS इम्पोर्टेंट है ना। आप डायरेक्ट कहते हैं कि मैं बैचलर्स के बाद ही कोई जॉब करूं तो ना करें MS। मतलब किस लिहाज से इम्पोर्टेंट, मुझे आपका क्वेश्चन थोड़ा क्लियर कर दें। Sir, for better jobs, MS is necessary for the students. जो आजकल के हालात है मेरे ख्याल में तो नेसेसरी बन गया है। मतलब कि जो टाइट सिचुएशन है स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, तो अगर आप कर लेंगे, अगर आपको बैचलर्स के बाद जॉब मिल जाती है, अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कर लें, एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा। उस फिर MS की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे जॉब अल्लाह ना करे और किसी वजह से नहीं मिल रही, तो करनी भी जॉब है आपने, फिर MS कर लें। तो MS वाले बंदे को ज़ाहिर बात है प्रेफर किया जाएगा बैचलर्स के बाद, बैचलर वाले बंदे की बजाय। Thanks, sir. और कोई लास्ट क्वेश्चन किसी का है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि टाइम ऑलरेडी एंड अप होने वाला है।
सर ये स्कॉलरशिप्स वगैरह। वालेकुम सलाम। सर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारा एडमिशन जब से हुआ तो हमारी मोस्टली क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, तो जी सर हम ऑनलाइन में उतना सीख नहीं पा रहे हैं जितना कि शायद हम फिजिकल में सीख सकते। जी तो सर हमारे 4 सेमेस्टर है, तो ये तो सर ऐसे जैसे हालात तो ठीक होने का मतलब नजर नहीं आ रहे ना, तो सर ऐसे ही टाइम खत्म हो जाएगा तो हमारा तो मतलब नॉलेज तो होगा नहीं। तो कोई ऐसी एक्टिविटीज या लोग कोर्सेज जो हम लोग तो इस ऑनलाइन कर टाइम सकते हैं? को बड़ा नेमत समझ रहे हैं कि घर बैठ के पढ़ाई भी हल्की फुल्की चल रही है ना होने के बराबर। और क्योंकि अच्छी चीज इसमें नेगेटिव तो है एस्पेक्ट के इन पर्सन आप नहीं सीख पा रहे कुछ, और ये वो पॉजिटिव चीजें भी बहुत हैं। आप अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव कर सकती हैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कोर्सेज पढ़ के, वही बातें जो सारे हमने सेशन में की हैं। आप माशाल्लाह अगर फर्स्ट सेमेस्टर है तो बेस्ट टाइम है, अपना इंटरेस्ट डेवलप करें, कोडिंग लैंग्वेजेस सीख लें, और ये सारे कोर्सेज फ्री पड़े हुए हैं, 100% फ्री हैं। आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर लें। आप ये टारगेट बना लें कि मैंने इस सेमेस्टर में, वैसे भी टाइम होता है, आइल्स की तैयारी कर लेनी है खुद से, और मैंने नेक्स्ट सेमेस्टर में उसकी मतलब है काइंड ऑफ अपेयर होना है उस एग्जाम के लिए, और मैंने उसको पास करना है बहुत अच्छे स्कोर लेके। और उसको तो मतलब अपेयर होने के लिए पहले बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट भी आप दे सकती हैं कि जिससे आपको अपनी सेल्फ असेसमेंट हो जाएगी। तो ठीक है, प्रैक्टिकली आप आजकल कुछ नहीं कर सकती, लेकिन बहुत ज्यादा कोर्सेज पढ़े ऑनलाइन फ्री अवेलेबल हैं, आप उनको कर लें। और मैं सजेस्ट करूंगा कोडिंग लैंग्वेजेस सीख लें इस टाइम के अंदर, तो इस जैसा फिर कीमती टाइम भी कोई नहीं होगा आपका, और ये बहुत ज्यादा मतलब वैल्यूएबल होगा। Dr. Hassan, is there any question or should we have to end up this session? Sir, I think there are no further questions. और हमारा जो है वो टाइम भी एंड होने वाला है, तो मे बी हमारे पास अगर कोई फर्दर क्वेश्चंस हैं तो हम लोग उसको जो है वो अपने नेक्स्ट सेशन पे इंशाल्लाह, अगर सर फैसल इतने काइंड होंगे और दोबारा हमें टाइम दे तो हम ज़रूर इनको दोबारा से इनवाइट करना पसंद करेंगे किसी और टॉपिक के लिए। और तो हम अगर कोई और फर्दर क्वेश्चंस हैं तो हम जो है वो उसको नेक्स्ट सेशन के ऊपर जो है वो ड्यू कर लेते हैं, क्योंकि सर आई अंडरस्टैंड कि हमने आपके ऑलरेडी जो है वो 2 आवर्स लिए हैं, इट्स मॉर्निंग ओवर देयर, तो ये बड़ा प्रीशियस टाइम है आपका और आपने हमें दिया है। आई एम सो थैंकफुल टू यू, इवन वी ऑल आर वेरी थैंकफुल टू यू सर। मैं रात को 3 बजे लैब से आया था और सुबह मुझे फिर मतलब उठना था क्योंकि मैंने ऑलरेडी कमिटमेंट आपके साथ की थी। तो लेकिन मुझे मेरा मकसद जो है हमेशा से जो रहा है, और जो मेरा मकसद इस सेशन को करने का भी यही था, मेरी ख्वाहिश है दिल से कि हर बंदा ज्यादा नहीं तो कोई एक चीज भी अगर गेन आज से कर ले और किसी बंदे की लाइफ इससे सेट हो जाए, तो इससे ज्यादा बर्थी चीज कोई नहीं होगी। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करे, मैं उम्मीद करता हूँ कि हर बंदा इसमें से कोई ना कोई चीज अच्छी लेकर आगे इंशाल्लाह चलेगा और अपनी जिंदगी के मकासद को हासिल करेगा। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस चीज को मैनेज किया है, कि इस चीज को ऑर्गेनाइज किया है, तो थैंक यू सो मच। सर हमें जो है वो आप दोबारा भी मौका दीजिएगा प्लीज। सब बच्चों के और बहुत सारी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग स्कॉलरशिप्स, तो मुझे थोड़ा सा लगा है कि माशाल्लाह से काफी बंदों ने ज्वाइन किया, लेकिन क्वेश्चंस किसी ने नहीं पूछा। ये तो वही बात है, जब हमें कोई चीज समझ नहीं आ रही होती है या दिलचस्पी नहीं होती हम नहीं पूछते ना, बिल्कुल। तो ये तो, लेकिन हमने तो बड़ा अच्छी बातें मतलब जनरल बातें डिस्कस की, पढ़ाई वाली बातें ही नहीं थी। बिल्कुल। अच्छा, ये YouTube लिंक का पूछ रहे थे मुझसे, आई डोंट नो समहाउ सेंड नहीं हो रहा यहाँ से। मैं डॉक्टर हसन आपको सेंड कर दूंगा, तो आप सबको फिर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। श्योर सर, श्योर। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड होपफुली एवरीवन गेन समथिंग बेनिफिशियल आउट ऑफ इट, और दुआओं की दरख्वास्त है। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।